हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन ट्रेनर जगन्नाथ पंडा जेपी सर. Once again, I am welcomes you on the beautiful series which is going on about part of the speech series. So today I am going to give you one of the beautiful session, beautiful lecture. So before starting my lecture, I want to speak something which is going to be very, very valuable. My dear students, as you all know, I am JP sir from Odisha, your spoken English communication trainer, including mind coach and life coach as well as a pranic healer. So my dear students, as I started my journey, this spoken English and communication training, so this is a beautiful journey. I thought actually not only from my state Odisha but also from the India, the students are lacking of knowledge of spoken English. They are not able to speak English fluently. So if I will try to do something for them, that will be beneficial for them. That's why I started this channel of spoken English and communication basis, that is the JPT Spoken English. So on this JPT Spoken English also completed its first batch of spoken English. So today I am just going to speak something which is very, very valuable. Actually, my dear viewers, English is a language. First of all, I told earlier also. Now I am telling that actually English is a language which is very, very easy. First of all, mindset, because if your thought pattern tells you that it's easy, then it is easy. Okay, because any language cannot be difficult. As you all know, a baby, how he learns, how she learns, he only observes, he listens, he observes and listens. After that, 1 year, a baby tried to speak in the native language. I am just giving you confidence that if you are confident in your native language, whenever you are speaking in front of 10, 20, 30 people, at that time you are confident in your native language, then obviously the time will come, you will be confident in your English language also. But main thing is that matters the confidence. So my dear students, so confidence is the most important thing that comes only by the practice. So practice more and more, then you can be a good speaker, you can be a good learner. Okay, and a good listener can be a good speaker, you also know that. So on behalf of JPT Spoken English, I am welcomes you all. This is the 7th number conjunction, because the part of the series which is a noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, already 6 parts we have completed, because whenever we will try to speak in English something, so all these parts will come. So as you think, actually without knowing these things you can speak in English. Suppose your brain is empty, okay, you have no words in your brain, then how can you arrange the words? Actually you have no words, so that is why you have to learn some words, that is called vocabulary power. Then after learning some words properly, then try to speak it. Okay, if you will try to speak it, then it is very, very beneficial. And tense, okay, after this completion of this video, this series, I will try to give more emphasis on the tense. So my dear viewers, those are watching this video, please watch till end. This is not a very big video, but it is very, very big lesson and very, very valuable lesson give you. So, and those are watching my channels, so my maximum people are watching my channel, but unfortunately I have to say that they are not liking and they are not subscribing my channel. So please, my dear viewers, like this channel more and more, and subscribe this channel more and more, and share your friends and the relatives, because whenever you are spreading the good thing, that will give you good results. So my dear friends, so don't mind, those are already subscribed, thank you so much, and those are not subscribing my channel, please subscribe to getting further videos. Okay, thank you, because after that also this journey will not end, this will continue. So there are so many practice sessions, so many lessons will come one by one. So my dear viewers, for your easy convenience, I have written all these things in the board. So whatever effort I am giving, just you try to give some type of effort, and you make yourself ready with the pen and paper, be handy, and just try to listen. Okay, this is the conjunction, sanjojaka abhyaya pada.
इसे कहते हैं उड़िया में संयोजक, अव्यय पद भी उड़िया में प्रायतः कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंजक्शन मतलब ये जोड़ता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कोई जैसे कोई शब्द को शब्द के साथ जोड़ता है, कोई क्लॉज मतलब कोई खंड वाक्य या कोई वाक्यांश को जोड़ता है, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन क्या कहता है, इस डेफिनेशन इट इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, क्लॉजेस एंड फ्रेजेस इन अ सेंटेंस। तो मतलब सेंटेंस में रहने वाले शब्द को, खंड वाक्य को या वाक्यांश को ये ज्वाइन करता है, जोड़ता है। तो इसलिए इसका इंपोर्टेंस बढ़ जाता है, जो जोड़ता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिसका रिलेशनशिप ब्रेक होता है, जो जोड़ता है, जो रिलेशनशिप को बनाता है, तो उसे बहुत भगवान का धुआं भी मिलता है, ठीक है। क्योंकि आजकल के जमाने में तो रिलेशनशिप खराब होता ही जा रहा है ना, तो इसलिए रिलेशनशिप को जैसे जो जोड़ता है वो बहुत अच्छा काम करता है। ओके, सो लेट्स कम टू दिस एंड हाउ इट वर्क्स। ओके, सो हाउ इट वर्क्स, it helps show relationship, link ideas and create complex sentences. Okay, by joining these clauses and words and other sentences, मतलब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के बाद ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्रिएट करता है। चलिए उसको देखते हैं। सो इट मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स माय डियर फ्रेंड्स। सो ये 3 तरह का होता है। So first one is your coordinating conjunction, second one is your subordinating conjunction, and the third one is your correlative conjunction. चलिए, so what is coordinating conjunction? That means it connects words, clauses and phrases of equal importance. तो equal importance रहने वाले words को, clause को, phrases को ये join करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा simply can remember the words and, but, or, so, yet. These are the simply your coordinating conjunction. Okay, these words coordinate to sentences, okay, and to clauses. So let's come to the coordinating conjunction part. There are some sentences I have written here. Okay, example sentences you can speak. These are the example sentences I have written here. Okay, first one is your and. Just look at this. Go there and help him. Go there and help him. उधर जाओ और उनको मदद करो. The second one is comes to I enjoy watching cricket matches and also like reading newspapers. So here is 2 sentences and 2 clauses joined by and. So what is this? I enjoy watching cricket matches and I also like reading newspapers. तो यहाँ पर क्या हुआ है, मैं क्रिकेट मैच और उनके साथ साथ रीडिंग न्यूज़पेपर, क्रिकेट मैच भी देख रहा हूँ और न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा हूँ। So there are 2 sentences and 2 clauses already joined by the correlative conjunction and that is your and. Okay, got it? Then the next one is our but. So how can I connect these 2 sentence with but? Look at the sentence. I wanted to go there but it was too late for me. So मतलब मैं वहां पर जाना चाहा लेकिन वहां पर जाने के लिए मेरा बहुत देरी हो गया था। So that's why मैंने अपने आप को रोक रखा। So here is the beautiful sentence. I wanted to go there but it was too late for me. Okay, and the next one is or. Okay, do you want coffee or tea? मतलब तुम क्या चाहते हो, कॉफी चाहते हो या टी चाहते हो। यहाँ पर जो कॉफी और टी दोनों वर्ड को रिलेट करता है, मतलब उसको कंबाइनिंग करता है, क्या तुम चाहते हो, तो मतलब ये और वाला शब्द है। ओके, डू यू वांट कॉफी और टी? आई थिंक यू हैव क्लियर। ओह यस, सो यू हैव रिटन सो शी वाज टायर्ड, मतलब वो क्लांत हो गया था। सो शी वेंट टू बेड अर्ली, इसके बदौलत उन्होंने आज बहुत जल्दी बेड को चला गया, ठीक है। से बहुत क्लांत हो जाइतिला, ସେଥିପାଇଁ से बहुत जल्दी आज कौन है बिछुना को पड़ी जाइछि। ओके, गॉट इट। और उसके बाद में हम आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, व्हाट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन माय डियर फ्रेंड्स? It introduces a subordinate clause connecting it to an independent clause. Okay, so it introduces a subordinate clause connecting it to an independent clause. A subordinate clause when connecting with an independent clause, then we can use these words like because, although, if, unless, until, etc. These are the subordinating conjunctions. Okay, let's come to the example, real examples. आइए
इस रियल एग्जांपल से हम समझ लेंगे कि ये कैसे काम करते हैं, हाउ इट वर्क्स एक्चुअली. सो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ओके, आई एम टायर्ड बिकॉज आई डिड नॉट स्लीप वेल yesterday night. So I am tired. Actually, I am tired. I am exhausted. Okay. So you can speak. I am exhausted. I am tired because I did not sleep well yesterday night. मतलब कल रात को मैंने अच्छे से सो नहीं पाया था, इसीलिए मैं क्लांत हो गया हूँ. तो मतलब यहाँ पर टू सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को, सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों को वो क्या करता है, रिलेट करता है या फिर कंबाइनिंग करता है. ओके. सो सेकेंड वन, आई विल गो टू द पार्टी. I will go to the party if you call me. अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं पार्टी को जाऊंगा. यदि तुम मते डाकिबो तेबे मु पार्टी को जिबी. ओके, गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स. I will go to the party if you call me. Actually my main motive is that we have to learn our second language English as well as our third language Hindi, because Hindi, you know, Hindi is our national language. Okay, राष्ट्रभाषा होने के नाते हमको हिंदी को अच्छे से सीखना चाहिए. बहुत सारे लोग भी जो हिंदी उनका नेटिव लैंग्वेज है वो तो अच्छे से हिंदी में बोल लेते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में बोल नहीं पाते. इसलिए हम कोशिश करते हैं उसको हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा समझने के लिए. एक्चुअली मेन थिंग, सपोज व्हेनेवर यू विल फोकस ऑन इंग्लिश एंड हिंदी, देन एट द टाइम साइमल्टेनियसली यू विल लर्न इंग्लिश एंड हिंदी. मतलब एक साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों को भी समझ सकते हैं. और हिंदी और इंग्लिश में अगर मैं करूंगा तो ये पूरा भारतवर्ष के देखने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, मददगार रहेगा. उसके साथ साथ भी हमारे उड़ीसा के बच्चे जो भी तो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो भी अच्छे से हिंदी को जानते हैं, वो भी समझ लेंगे. तो इसलिए ज्यादातर कि मैं उड़िया में नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ उसको हिंदी और इंग्लिश में करने के लिए, because which is going to be very very useful for your further upcoming exam or for whenever you will just appointed out of the state Odisha in different states. Suppose you will go to south side, then you have to speak in English. Whenever you will go to north side, at the time you have to speak in Hindi. So मतलब दोनों भाषा पर मास्टरी लाने के लिए ये एक आसान तरीका. ठीक है, चलो let's start the next one. So I will go to the party if you call me. Then the next example I have written here in the board. We will wait until you arrive. Okay? We will wait. मतलब हम लोग आपको इंतजार करेंगे. कब तक? जब तक तुम नहीं आते हो. तो मतलब until के देखो यहाँ पर एक अच्छे से एग्जाम्पल, until. ये until के बाद जो सेंटेंस होता है ना, वो हर वक्त क्या होता है, पॉजिटिव रहता है. ठीक है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस इसके बाद में लिखोगे. बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलत कर देते हैं, जैसे कि बोल देते हैं we will wait until you do not arrive. ओके, तो मतलब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस की जरूरत नहीं है. आफ्टर until, because until is the negative sentence. ठीक है, until is a negative word, so that's why after until always use the affirmative sentence, positive sentence. Okay, we will wait until you arrive. So until and unless works in the same process. Okay, you will be late unless you hurry up. अगर तुम hurry up नहीं करोगे, अगर तुम जल्दी नहीं दिखाओगे तो तुम लेट हो जाओगे. ठीक है, got it? Then the next and the last one is your correlative conjunction. So what is correlative conjunction? It plays a vital role. Okay, it plays a vital role to combining these two sentences. Okay, and the most often time we are using these correlative conjunctions. Just like we are telling, okay, he is not only intelligent but also he is very very powerful. मतलब वो खाली तो इंटेलिजेंट नहीं है, वो पावरफुल है. He is not only intelligent but also he is rich. Okay, let's see. So it is used in pairs to connect words. मतलब ये पेयर से आता है. ओके, और phrases with equal importance रहने वाले वो पेयर में आता है. जैसे कि बोथ जहां लगता है, बोथ के पास तो and आएगा, इधर के पास और आएगा, तो इसको either कह सकते हो, इधर भी कह सकते हो, इधर और neither nor भी कुछ बोलते हैं. Okay, and neither nor you can speak also, no problem, because either or, neither nor, not only but also like this are the correlative conjunction. Okay, so let's come to the example, then we will clear. And third part, this is your correlative conjunction. So what is correlative conjunction? Just like, look at the sentence, I love both reading books and watching cricket match. मतलब कोई एक लड़का या फिर कोई लड़की वो बोलता है मुझे पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, मतलब मैं क्रिकेट देखना भी, क्रिकेट मैच टीवी पर देखने की चाहत रखता हूँ, और उसके साथ साथ मुझे पढ़ाई करना भी, किताब से पढ़ाई करना भी अच्छा है. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, nowadays the IPL match is going on, some students are also wasting their time on the IPL matches. Okay, so my dear students, please watch
somehow try to less your क्वांटिटी, जैसे कि हम बोलते हैं 4 घंटा या 3 घंटा हम जो वेस्ट कर देते हैं, डोंट वेस्ट दैट टाइम, जस्ट सिंपली यू जस्ट गो फॉर द स्कोर and just you try to read your books and whatever your test books and whatever you are doing, because whenever you lose your time you can never get that time return back, because you know that time and tide wait for none, so समय किसी का इंतजार नहीं करता है. So my dear viewers, please try to focus on yourself, because whenever you focus on yourself you will be a great man, you will be a great person in your future. As you are a student, you can do better in your life. Okay, so don't waste your time, please try to listen next. So you can either go there or stay at home. You can either go there or stay at home. मतलब तुम वहां जा सकते हो, नहीं तो तुम घर में रह सकते हो. तुम सेठी जाई पारो किंबा तुम्हें घरे रही पारो, किसी असुविधा नहीं. तो माने तुम सेठी जाई पारो, तुम सेटा को जाई पारो किंबा तुम्हें घरे रही पारो. तो दुईटा सेंटेंस को कौन करछि हमर एठी कोन आइदर और द्वारा संयोग होईछि. ठीक है जी, ये वाला हमारा संयोजक अवयव पद, इसे कहते हैं संयोजक अवयव पद. सो शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो ब्यूटीफुल. वो इंटेलिजेंट नहीं है, बुद्धिमती नहीं है, वो फिर भी बहुत सुंदर है. ओके, वो बुद्धिमती भी है और सुंदर भी है. मतलब यहाँ पर हम नॉट ओनली बट आल्सो का इस्तेमाल किए हैं. He is neither my friend nor my relative. मतलब वो मेरा फ्रेंड नहीं है, दोस्त भी नहीं है, वो मेरा रिश्तेदार भी नहीं है. ठीक है, are you getting my points, my dear friends, my dear viewers? Yes, thank you. So this is all about our conjunction part, and the next video I will bring the last part, last but the not least, that is the interjection emotion word and how it works. I will tell you, but just once again I am telling you and appeal to all of you. Thanks for watching this video. So please give like, comment something which is very very valuable to me. Comment something, and as well as subscribe our channel more and more and share to your friends, because until and unless you are subscribing, so it is very very useless to me. So thank you my dear friends, and thank you for watching this video, and God bless you all. Bye.